What are the reasons behind that employees leave their organization? क्या reasons होते हैं जिनकी वजह से employees companies को drop कर देते हैं, छोड़ देते हैं? Employees leave their organization for a variety of reasons which can be broadly categorized into several key areas. Understanding these reasons can help employers address potential issues and improve retention rates. Today, I am going to tell you some common reasons why employees leave their organization. So before we move on, please watch this video till end. So let's start the video. Number one, lack of growth opportunities. Employees may feel that there is no clear path for career advancement within the organization. Inadequate training and development. Insufficient opportunities for professional development and skills enhancement can lead to dissatisfaction. Lack of recognition. So many employees who feels undervalued and unappreciated are more likely to seek employment elsewhere. Inadequate compensation. Employees may leave if they believe they are not being paid fairly for their work. Excessive workload. Burnout from consistently high workloads can lead to employer seeking better jobs for a better balance. Lack of flexibility in work hours or remote work option can be significant drawbacks. Lack of job fulfillment. Employees who do not find their work meaningful or challenging are more likely to leave. Misalignments with job role. Employees who feel their skills and interests are not aligned with their job responsibilities may seek roles that better fit their strengths. And poor communication. Lack of transparency and poor communication from leadership can lead to a sense of disconnect and dissatisfaction. Relocation concern. There are so many employees who have had a relocation concerns may lead employees may need to move for personal reasons such as family commitments or a partner's job transfer. Next, health issues. Personal or a family health issues might necessitate a job change or leaving the workforce temporarily. Better opportunities elsewhere. Higher pays. Offers of higher salaries or better benefits from other companies can attract employees away. Better career prospects, opportunities for advancement, learning and career development elsewhere can be appealing. So friends, these are the reasons where can I leave this organization. But at the end, I want to tell you something that if really you are fed up with the job, अगर वाकई आप जॉब से fed up हो गए हो, if you are not interested, if you don't like the faces of people, but never be absconded from the company. आपको माहौल पसंद नहीं है, आपको लोग अच्छे नहीं लगते, आपको सैलरी अच्छी नहीं लगती, आपको छोड़ना है आप छोड़िए. You are not handcuffed with any company. आप एक अच्छे टोन पे कंपनी को छोड़िए, एक अच्छे नोटिस पीरियड सर्व करके आप कंपनी को ड्रॉप करिए कि कल को अगर आपको उस कंपनी की जरूरत पड़ जाए तो आपको वो कंपनी रिटेन कर ले. अगर आप कंपनी से खुश नहीं है, वर्क से खुश नहीं है, टॉक टू योर मैनेजर्स, टॉक टू योर लीडरशिप, टॉक टू योर सुपरवाइजर्स. क्या पता आपको वहीं सोल्यूशन मिल जाए. बिकॉज नई कंपनी ज्वाइन करना क्या गारंटी है कि आपको वहां और बेहतर लोग मिल जाएंगे, बेहतर मैनेजमेंट मिल जाएगा, बेहतर सैलरी जरूर मिल सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट एंड कल्चर नहीं मिला तो फिर आपको रिग्रेशन होगा कि काश मैं वहीं मैनेजमेंट से बात कर लेता और इस कंपनी को कंटिन्यू करता. क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कंपनी में 3 साल गुजारते हैं, आप एक अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ के साथ, आप यूज्ड टू हो जाते हैं चीजों के.
लेकिन आपको जरा सी कोई बात फील हुई और आपने कंपनी छोड़ दी विदाउट गिविंग दी नोटिस पीरियड, बॉस वो 3 साल का जो आपका करियर है उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड चेक होगा तो कंपनी का वेरिफिकेशन जाएगा नई कंपनी में। सो आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं प्लीज उनको आप दिमाग में रखिए और कोशिश करिए कि अगर आप किसी भी चीज से खुश ना हो तो स्पीक टू योर लीडरशिप। If you like this video, please follow my channel over the YouTube and the Instagram as I'm your interview coach, Rehan Aftab. Goodbye.